Good afternoon. This is Guinea Aneja, and continuing with our last session that we did 2 days back about getting over the death of a loved one. So, getting over the death of a loved one because, all our life we've been losing someone or the other, whether it is death or whether it is a breakup. Uh, Actually, since it's Valentine's tomorrow, we should have had a session about that, but never mind. Uh, Maybe we'll have it tomorrow. But right now, it's about moving on. It's about understanding death. Why do people grieve when somebody passes away? Is it just because you're meant to? Because the society expects you to? Because that shows them how much you loved someone? So then that would be a farce. No, it's not that. It's only a farce, maybe for some people, but generally, the pain of not having, Namaste Dalia, the pain of not having somebody around that you are used to uh, is far greater. I don't know where I kept it. I remember when my dad passed away. So my dad passed away around 1997 or 98. Hi, Cosmic Tarot, Pushpa. Hi. So I had not been in touch with my dad for the last 4 or 5 years. Hi, Pammi. And I don't know if I should say this, but maybe I was my dad's favorite. Or maybe I loved him, although I did have a lot of issues with him. But it was a very love hate relationship. But I had not been in touch with him after he decided to divorce my mom and get married again. That was in 1991. So almost like, other than stray incidences of emergency, I had not been in touch with him. But after he passed away, uh, before he died, 15 days he was there in my house. I was looking after him. And after he passed away, for years, I was dreaming about him. For years, I was missing him till date when I have to go to town because I grew up in town. हिंदी में बोलना चाहिए तो मैं टाउन में मतलब बॉम्बे प्रॉपर बॉम्बे माहिम के बाद जो है वो बॉम्बे नहीं है वो वो सबर्ब्स हैं बॉम्बे के तो प्रॉपर बॉम्बे में पली बड़ी हूँ तो आज भी जब मैं वहां जाती हूँ तो उनकी बहुत याद आती है उनकी बहुत सारी बातें याद आती हैं थैंक यू पुष्पा हाय भावना हाय बबीता सो याद आती है कई बार समझ में नहीं आता कि गुस्सा बहुत था कुछ चीजें उनकी ऐसी थी कि नफरत बहुत थी फिर भी उनकी याद क्यों आती है सपने में क्यों आते हैं नो आई डोंट थिंक दैट समझ में नहीं आता कि अगर वो जिंदा होते तो मैं उनसे नफरत करती या उन्हें माफ कर देती क्योंकि माफ तो मैं उन्हें कर चुकी हूँ लेकिन मैं उनसे रिश्ता रखती या नहीं रखती और हमारा ज्यादातर हर इंसान का हर एक के साथ मैं अपनी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शायद रितेश को लेट हो गया है और उससे मेरी बात हुई थी कुछ मिनट पहले रिट्स नॉट एबल टू लॉग इन 5 minutes ओके सो ही इज हैविंग ट्रबल लॉगिंग इन सो साउथ मुंबई यस that is the actual Mumbai. तो we'll discuss that maybe sometime. बांद्रा जो था वो अंग्रेजों के गुलामों के लिए ब्रिटिशर्स ने बनाया था और उनके गुलामों को वहां पे घर दिए थे बांद्रा विलेज ऐसा मैंने सुना है सो हर एक ने कभी ना कभी तो मरना ही है वो तब 20 साल पहले नहीं मरे हो तब मर जाते हाय हेलो
You're frozen. Give me a minute. The lighting is bad. Uh, keys. रितेश, तेरे पीछे का कर्टन बंद कर दे, बिकॉज हाँ, दिस इज बेटर. ऑल राइट. Okay, so I was just talking about my experience with my father when he died. How I've not been able to move on. Why this topic? Sanika, the thing is that in the last 2 years, I've seen, we all have experienced that neighbors, friends, family. रिच, तेरी तरफ था थोड़ी डिस्टर्बेंस है. बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अपने मर रहे हैं, किसी भी वजह से मर रहे हो, चाहे कोविड से मरे हो, चाहे वैक्सीनेशन से मरे हो, चाहे किसी और वजह से मरे हो. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उनके मरने के बाद उन्हें भूलना नामुमकिन हो जाता है, वहां से आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, अक्सर रोते हैं. मतलब वो ग्रीविंग पीरियड जो है वो आमतौर पे हमारे वेदों में भी 13 दिन का होता है, और 13 दिन आप अपना काम धाम बंद करके ग्रीव करते हो. उसके बाद साल भर तक यू कैन टेक टाइम टू गेट ओवर, लेकिन उसके बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है. लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए लाइफ कभी नॉर्मल नहीं होती. आई थिंक माई वॉइस इज echoing your side, Ritz. I can hear you clearly. I can't see you, but is my camera angle okay? Can you see me? Your voice is not clear. You can't hear me? I can hear you, but it's not clear. You can't hear me? Okay, give me a minute. हाँ. So इसलिए ये yeah, tell me. Can you hear me now? Oh my God, great. So हम लोग हर तरह की बातें करते हैं, जिंदगी के बारे में हम लोग बहुत बातें करते हैं. सनिका, why does death have to be fearsome? It does not need to be fearsome. Honestly, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस या मेरा पर्सनल जो सोच है वो ये है कि डेथ इन फैक्ट इज वेरी ब्यूटिफुल. देयर इज नथिंग टू बी स्कैर्ड अबाउट. उससे ज्यादा सुंदर चीज कोई नहीं है, क्योंकि आपकी सारी टेंशन खत्म, आपका सारा स्ट्रेस खत्म, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म, भागदौड़ खत्म, सब कुछ खत्म. एक गहरी नींद है बस. और उसके अलावा आपका सोल जो है वो जाके ईश्वर से मिल जाता है, या मिल सकता है. मिलता है या नहीं इसके बारे में अब रितेश बात करेगा. लेकिन हाँ, एग्जैक्टली, जब आप पैदा होते हैं, आपके पैदा होने से पहले आपकी डेथ डिसाइडेड है, तय है कि आपने मरना है. तो फिर उससे क्या डरना? उससे डरने वाली डरावनी तो जिंदगी है. इसके अंदर अगले पल क्या हो जाए आपको पता नहीं. और डर आमतौर पे इंसान को तब लगता है जब आपको पता नहीं कि आगे क्या है. तो अगर आपको नहीं पता कि आगे क्या है, उसी बारे में हम आज यहाँ बात करने वाले हैं, ताकि मन से ये डर निकल जाए. बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन ली हुई है, और अगले साल, 2 साल, 3 साल में अनफॉर्चुनेटली, एंड आई होप आई एम रॉन्ग, कि बहुत सारे लोग किसी ना किसी वजह से मर सकते हैं. कल मुझे पता चला, मेरी एक फ्रेंड को वैक्सीन उसने भी ली हुई थी, बहुत मना किया था, नहीं सुनती है, उसे बेल्स पैल्सी हो गई. उसकी वजह से मुझे खुद डर लगा कि आज बेल्स पैल्सी है, कल किसी और फ्रेंड को कुछ होगा, कल किसी और रिश्तेदार को कुछ होगा. मतलब धीरे धीरे दुनिया में कोई रह नहीं जाएगा. जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरे अपने, वो रह नहीं जाएंगे. तो वो तो चले जाएंगे, उनके लिए तो जिंदगी खत्म हो गई. मैं कैसे जीऊंगी? वो डर, वो ख्याल इतना डरावना था कि मैं बता नहीं सकती. लेकिन
अगर हम, आई एम अज्यूमिंग के यहाँ पर देख रहे बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, क्योंकि आप लोग चैनल फॉलो करते हैं, डॉक्टर विलास जगदाले, कपिल बजाज, योहान, सबके इंटरव्यूज देख चुके हैं, यू आर वो पीपल. So I'm assuming that you've not taken, the shot. But anyway, that fear needs to go away from our hearts, and we need to understand what actually death is, what happens after death. A lot of people, like for, I'll tell you, in 1990, 1999, I think 98 or 99, I'm not sure. The next year, no, the year before my dad passed away, I had a near death experience. मर गई थी मैं. डॉक्टर ने बोला ये वापस नहीं आने वाली, और मेरे सर के पास कोई है, वो खड़े होके महामृत्युंजय जाप कर रहे थे, मेरी आंखें ऊपर चढ़ गई थी, वगैरह वगैरह. आई वॉज डेड एंड आई वॉज गॉन. And then I came back. I came back with a bang. It was like the Big Bang Theory. Suddenly वो सांसें वासें बंद हो गई और एकदम से झटका लगा, and I opened my eyes and I took a deep breath and all, and well, whatever. So we are going to talk about all these things today. So Ritesh, he always comes up with the most bizarre subjects, and he wants to talk about how to prepare for your own death. Last time मुझे याद है जब हम लोग भैरवी के साथ सेशन कर रहे थे, तो जय ने ये सवाल या किसी और ने ये सवाल पूछा था, how to prepare for your own death. So we will talk about that also today. So Ritesh, the platform is all yours. Please begin. तेरे साइड पे डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, बाय द वे, लोगों को भी लग रही है. तो ये अपना ये निकाल दे, वायर वाला लगा, अगर है तो हेडफोन लगा. iPhone में वायर नहीं जाएगा हाँ, ना, जैसे iPhone we don't have a jack. और मैं ये निकाल दूँ, like maybe directly will be sounding much better. Give me a minute. और मेरे इधर भी बहुत डिस्टर्बेंस है क्योंकि ऊपर काम चल रहा है. एको आ रहा है रितेश तेरी तरफ से. तू अभी कुछ भी मत लगा, ये भी मत लगा, हाँ तू अभी नॉर्मली बात कर. हाँ, नॉर्मली अब ठीक है. नॉर्मली है. इज इट गुड? दिस इज गुड. Okay, okay. So where were we? First of all, we'll start with the quote that I love. Always we use it. That death is the biggest pleasure of life. Okay. So, and why is that so? We've spoken about it in the last video. Like the moment you have any sort of release from your body, okay, be it एक cheek भी अटक जाती है या whatever, maybe you are making out, you're having some sort of intimacy with somebody. Everything leads, the end of your pleasure leads to a release. Okay, the moment you release, you feel relieved. Be it sneezing or having a sexual relationship, whatever, everything ends up to release. So the हिंदी we have to do it in हिंदी Hindi. पूरा we हिंदी are में. going to do this whole session in Hindi. All my sessions now onwards, we are trying to do it in Hindi. तो बताना चाहिए था 2 दिन पहले. So that it reaches the masses, because a lot of people are not comfortable with English. तो जब हम किसी भी तरह का रिलीज अपनी बॉडी से करते हैं, आई डोंट नो रिलीज को क्या बोलते हैं, बट छींकते हैं या एनीथिंग एल्स, ओके, सुकून मिलता है when something releases, any sort of thing releases out of your body. Okay, so just imagine your whole soul leaving your body. That is going to be an ultimate pleasure. Like there's no other pleasure like that. So that you only experience once in your lifetime. So that is the biggest pleasure of your life, and one should not be scared of it. Of course, you're scared for your own loss, as you said that you're scared. Oh shit. तो डर लगता है. जैसे शरीर से आत्मा एक ही बार निकलती है. वो सबसे बेस्ट प्लेजर होता है लाइफ का. ओके, एंड पीपल विद एनडीए, जिन्होंने एनडीए एक्सपीरियंस किया है, एनडीए इज नियर दैट एक्सपीरियंस. सो
वो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कुछ ऐसा डरने जैसा नहीं है, इट्स फन, इट्स बेस्ट प्लेस टू बी एट। बट द प्रॉब्लम इज जब तक हम यहाँ होते हैं, यहाँ की सफरिंग, एंड वी हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट हेल एंड हेवन, दैट आल्सो, वो भी हमने सब लास्ट 20-30 ईयर्स से बहुत बड़ा रिसर्च है एनडीए पे कि देयर इज नो सच थिंग एज हेल एंड हेवन, सब कुछ यहीं पे है। सो वो सब हमारे दिमाग का है, एंड देन दोज आर डिफरेंट रियलिटीज दैट वी क्रिएट। So Once, death once, shouldn't be feared. It should be एक loved. It should be cherished. Yeah. एक मिनट, पहली बात तो यू कीप कमिंग बैक टू इंग्लिश, इट Yeah. शुड बी लव, Because नो। of words, सेकेंडली, हेवन words, एंड हेल, स्वर्ग और नर्क जो है वो, ये नर्क है। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, क्यों? क्योंकि उसे पता है अपने कर्मों का भुगतान करने आया है। ये जिंदगी जो है ये हेल है, ये नर्क है। but इसके this is बाद, मरने के बाद जहां आप जाते हो वो स्वर्ग है। वहां पे कोई ऊपर नीचे स्वर्ग नर्क वो सब कुछ भी नहीं है, सब right. यहाँ है, दिमाग है, आपकी सोच है। अगर आप Yes. अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, भगवान से मिल जाओगे, मोक्ष मिल जाएगा। और अगर आप कर्म अच्छे नहीं करोगे तो आओगे वापस यहीं पे। मतलब अब मैं क्या बोलूं? Again, वो सब भी टेक्स्ट बुक चीजें हैं। That karma, like I don't believe in karma. It doesn't exist. It's just your programming कि आपको कोई चीज सिखाई है, ये खराब है, तो छोटा सा भी मच्छर को मार के भी you'll pay a price, big price. Why So do you that's come back? topic. That's a different subject Why do altogether. you That come back? why? What? Why do you Why did come I? back? Why do you take birth and come back? Because it is tempting. It is always tempting because आपके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती उस टाइम पे, तो यू डोंट रियलाइज कि ये बॉडी में आने के बाद कितनी पेन और सफरिंग होती है, बी इट गुड और बी इट बैड। ओके, सो समटाइम्स व्हेन यू गो टू बुफे, ओके, तो कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि वो लगता है ये मैं नहीं खा सकता, दिस इज टू स्पाइसी, बट स्टिल आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year, you want to taste a little bit of it just to get a new flavor in your life. We all do that. And then the moment you put it in your mouth, फिर realize होता है कि अरे ये तो नहीं करना चाहिए था। और मे बी सम पीपल डू इट विद अल्कोहल, लाइक टू मच। ओके, सो ऐसे ही सम पीपल जब वो आते हैं तो दे टेक टू मच इन देयर प्लेट बिकॉज दे डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू टेस्ट। When you come here, when you eat it, drink it, then you know, oh shit, I fucked up. It's too much. I couldn't. And this is not a plate which you can leave empty. You have to finish it before you go. So just for the experiences, we come here. Just for the experiences, we keep getting. There's another whole research about it. कि जब आप मर जाते हो, then there are entities and there are deities or whatever you want to call them, and वो आपको programming करते हैं. And when you pass the white tunnel, it's a very famous thing. जब आप tunnel pass करते हो, the moment that is one of the few things I think which should be taught in schools, maybe in form of stories, not necessarily unko bolo this is the reality of life, but this should be one of the stories which you need to tell in school. So जब आप लाइट से पास होते हो, that time you see your whole life in like 7 seconds or something, your whole life passes away, and then based on that वो आपको पूछते हैं, now you decide, do you want to go back, do you want to suffer, do you want to stay here, do you want to learn more, whatever you want to do. But 90% of the people, because we use this vibration on a maximum level, that is guilt and fear, lowest vibrations that most of us survive on. That's why I felt that's how COVID came, because everybody had that vibration, guilt and fear, and somebody put it out कि ये बीमारी है, and वो collective consciousness से इतनी बड़ी बन गई, and वो reality बन गई. So similarly, what we do is we also go and fuck up there because we have this guilt and fear energy. So we choose to suffer, we choose all the pain and all the pleasures, but you don't remember it once you're here. So it is a beautiful thing, but after that people get tempted after a while, and a lot of souls, जिनको ये programming नहीं होती है, they don't think about it, they just feel it's heaven or hell. So I'm dying, I'm going to hell. So वो spirits अलग realm में अटक जाती है, they don't they're not ready to move into the other side. So there's a lot of other realities we have. We call it supernatural science, like ghosts and spirits and all that stuff. But if everybody's programmed in a certain way that there is nothing to be feared about, so I think वो सारी चीजें cut off हो जाएंगी because people will be prepared for it. Okay, so initially, like some cultures, some Adivasi cultures, some tribes in the world, they celebrate death. The person dies, there's a huge party.
Okay, Yes. so Agree. they still know that, it is not something to cry about. It's something to, you know, it's Celebrate. like an honor. They're going to a better side, so they do Yeah. celebrate. Like some tribes. So that is the actual thing you need to do. Like when person passes away, you need to celebrate his freedom. But it will not sound correct, and nobody will do it. But at least you should try. And they, like you said, 13 days of mourning, that they tell you because the spirit is still around in those days. Okay, it is taking time. So the spirit should not be disturbed thinking, that I am gone and there's nothing happening. Like, nobody gives a damn, because there are few days or few hours the spirit is still around. It's trying to sometimes get back into the body, sometimes, trying to understand what happened. People who don't know, like sudden death, so they're not prepared. So that's why it's like they tell you that 13 days you don't need to grieve, you don't need to cry, but those 13 days you should do things that will put him closer to the spirituality or to God, or you do certain things that calms him down. A That's party why you energy do will not party. calm a spirit down. He will not. Yeah, so a party thing maybe will not calm the person down. You will want it to stay here. Like, I also want to enjoy the pleasures, but those 13 days you do part or whatever, and that's how they leave. You make them realize for the next 13 days that this is a world you need to go in. It's not for your grieving, it's for the spirit to understand that there is another world. So that's how it is, and it should be taken in a fun way. I think people should wear mugs and t-shirts which which says death is the biggest pleasure. And once the fear is out, I think a lot of diseases, a lot of things which are coming in a collective consciousness way, they're coming in a bigger way. Like all these variants keep coming because people are getting more and more fearful. So this COVID thing is becoming more and more bigger. If we can all, within collective consciousness, make a temple so popular, like so many popular temples हमारे पास है, जहाँ पे कि वहाँ जाके आपका फायदा होता है या काम हो जाता है, you get a blessing, you get some sort of relief. Why is that? It's not the temple, because so many people have believe in that spot. Like यहाँ जाके ये चीज करेंगे तो वो हो जाएगी. That is collective consciousness. तो जैसे हमने positive consciousness create की है, like Golden Temple and lot of other places, we have created. Tirupati. Yeah, so similarly we have created this negative collective consciousness, which is death, which is it is not even death. Death is a positive thing, but all these diseases, all this suffering, the COVID comes from that. This is my view, that it's not that of a big deal, but our consciousness, our guilt, fear of losing out people has made it so big. Like when initially it started, I remember I was so freaked out, and I was doing this alternate medicine to study, and then I was constantly looking out for this COVID cure. And I was like, I will not sit until I find it out. And then I met Dr. Susan, and then you know I was a bit relieved. And when I knew there's a cure, I wasn't worried. And I think I had it twice in between, but it didn't affect me. It didn't Nothing happened. It just went. you know the whole Everybody was around me was protected because I was secured inside that I have this. And so I spoke to her, and then we met so many. We've given medicine to so many people. So it's, I don't know if the medicine works 100%, but the confident, the you see those testimonials, you become, you lose that fear energy from that disease. So I have So, okay, we separated. are we are veering from the subject. So it's about the fear of death. So that is what, now we all have fear. We create diseases to death. We create everything from that fear. Okay. So once you lose the fear, see, that is anyways going to come. There has to be a time where we all go. But if you lose the fear, it's not going to be any painful. It's not going to be saddening. It's going to be one of the stepping stone in your life, where you're moving to a better direction. You're going to a better place. That doesn't mean people have to do something to themselves. Like a lot of occult people did that. They go in like number of hundreds and 200s and kill themselves just because to experience this pleasure. Now that is stupid, because you have certain rules when you come here. You can't just kill yourself, just to experience that pleasure. You have to finish your uh, soul contract, whatever you've written, you finish it and then you die. So that also people take it in a wrong way, that that is a bigger pleasure. Let's kill ourselves and let's finish all the suffering. But that's not how it works. You have to start again. पूरा फिर से शुरू करना पड़ेगा. So it's better whatever you signed up for, you finish it, but you play it like a game. There's new things happening every day, so nothing to be worried about. When you'll die,
we won't be there. But maybe the small little suggestions that, like I told you, the tunnel thing. When you go away from that tunnel, when you pass, there are entities or angels or your own subconscious beings. There's no label for it, but they tell you. Can you hear me? Can you hear me? Okay. I was So muted. I was just saying that when you pass through the tunnel, you see your ancestors and your higher masters who come to take you. So yeah, if you can see whatever you're programmed to, because those things have no label. Like if you have an ancestor programming, you will see that. If I have an angel programming, I will see that. There's no label. There are beings. That's all, and those beings tell you. A lot of them are kind of a naughty beings. They're not necessarily, the good ones. They're also some naughty ones. So they push you towards, suffering. They'll tell you, you've done this, you've done so much in your life, do you think you want to go for a positive change? So most of them feel like, no, they're guilty. They're like, no, 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 I still want to suffer, I did a bit bad. So I feel that is a small key which you need to learn, that when you pass through that tunnel, okay, uh, and they ask you, or your subconscious asks you that, this is what you did in your whole life, now what do you want to do about it? You say, I am done, I'm finished, I forgive and forget. I don't want to go and pay back, I don't want to go and suffer, I don't want to. But that is the most difficult thing to do, because when you are, even if you go to a temple, you feel, if you have done something bad, वो याद आता है कि मैंने ये किया है, मुझे माफ कर दो and all that. But when you are near to God, तो वो सब चीजें छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होती है. बट वन मस्ट डू इट. वन मस्ट रिजेक्ट wanting to coming back. One must reject the suffering. It is as simple as that. It's not you have to do 1,000 years of meditation and get moksha or whatever. You can do it. This is a new reality, and we have this theory in our new reality, and it is it is also attracting a lot of people. So it is also creating a collective consciousness which is turning into a reality. Basically, when you're alive and you believe, it's all about belief systems at the end. अगर Yeah. आप जिंदा होते हुए ये मान के चलते हैं कि मौत डरावनी नहीं है, वन, मौत के बाद कोई स्वर्ग या नर्क या कर्मों का हिसाब नहीं है, टू, और तीसरा, ये मेरी आखिरी जिंदगी है, इसके बाद आई एम गोइंग टू असेंड, मुझे मोक्ष मिलेगा और मुझे मोक्ष चाहिए, एंड दैट्स इट. आपको यहाँ वापस धरती पे भुगतने के लिए, नर्क भुगतने के लिए कोई नहीं भेज सकता. हाँ, अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई नहीं भेज सकता है. और नॉट नेसेसरीली कि सब नर्क के लिए आते हैं, लोग अच्छा एक्सपीरियंस करने भी आते हैं. ठीक है. सो दैट ऑल्सो, इफ यू वॉन्ट कि हाँ मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस करना है, मेरी ये सारी चीजें रह गई इस लाइफ टाइम में, आई वांट टू गो एंड डू इट, यू कैन गो एंड डू इट. बट व्हेन यू फिल योर प्लेट, जब आप उसमें सब डालते हैं चीजें, मेक श्योर कि जो चीजें आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओ वो चीजें नहीं डालो. बिकॉज ज्यादा लोग चीजें सफरिंग वाली डालते हैं, बिकॉज एवरी सोल हैज दिस कॉन्सेप्ट रजिस्टर्ड इन द ब्रेन कि जितना हम सफर करेंगे उतना वी विल रीच ऑन अ हायर लेवल. यू नो Awakening comes from suffering, awakening comes from all these problems. That's not true. You just, can you hear me? Yeah, I can hear you. I'm just I was on Instagram, so I'm just putting the title. You carry on. Okay, so yeah, that's about it. So uh, you don't have to So worry about it. it's a, You need to have you a proper, spoke. like maybe a step by step. There should be like a paper at least on it, so people can practice it every day. Like we practice medicines, like we practice meditation, we practice herbal things. So this is also something which needs to be practiced. Okay, I'm working little bit on it, how to frame it properly and correctly. And also there's something, you need to remember all the time. Like one thing is this: death is the biggest pleasure of life. And the second thing is, you're not living, you know you are here to die. You're just working towards it every day. You're just here to die. You have taken birth because you have to experience that pleasure of death. Every day is just a step closer to that. So we're not living, we are actually here to die. We Hindi, live after death also. We are living, we are immortals. We don't go anywhere. We are living always. Hindi. इतना बड़ा हिंदी में you translated. जिंदगी जिंदगी के बारे में नहीं है, जन्म से मौत का एक सफर है, बस
मरने के बारे में है कि जब आप मरे तो सब लोग आपको हम आते मरने, अच्छी तरीके से याद करें। नहीं हम आते मरने के लिए हैं, बट हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं हम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, 60 बर्थडे, 50 बर्थडे, 70 बर्थडे, पर हम आते हैं मरने के लिए। एंड हर रोज हम थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं वो प्लेजर के लिए, बट वो प्लेजर से डरते भी है ना। इट्स लाइक गोइंग इन अ जाइंट व्हील कि एवरीबडी वांट्स टू गो, बट पहले वो डर है, दैट फियर एंजाइटी कि बैठने के बाद क्या होगा। तो इट्स गोना बी एज फन एज अ जाइंट व्हील। कुछ लोग उल्टी करेंगे जैसे जाइंट व्हील में करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट प्रोग्राम, को पता नहीं है हाउ टू डील विद दैट। सो या इट इज वेरी सिंपल, इट्स ब्यूटीफुल, इट शुड बी। लेकिन ये तो ठीक है कि हमें अपनी मौत के लिए अगर हम प्रिपेयर्ड हैं, अगर वो डर हमारे मन में नहीं है और ये सब बातें हैं तो ठीक है। लेकिन हमारे आसपास जो अटैचमेंट्स हम जिंदगी में फॉर्म कर लेते हैं, जब वो लोग मर जाते हैं तो बहुत सारे लोग उस डेथ से उभर नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज completely surprised to see after your father died how you handle it. So नाउ प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं, दुनिया ऐसा करती है तो हमें करना चाहिए, नहीं तो दुनिया क्या बोलेगी। और बहुत राइट, सारे लोग जेन्युइनली, इतना प्यार होता है, ऐसा नहीं है कि जो लोग मातम नहीं मनाते 4 साल तक उनको प्यार नहीं होता, लेकिन जो लोग मतलब उस ग्रीवेंस से निकल नहीं पाते, तो क्यों एंड हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट? So my thing was a little different because we had suffered already for almost 100 days before he passed away. We were in ICU constantly, so we were prepared. Kind of we knew that this will happen, and being a psychic, like a year back, I got this intuition that something is going to happen, and the whole year I was sick, knowing that something is happening very soon, and I kept telling that this might happen, aisa kuch ho sakta hai, and then it actually happened. And then we didn't come back home for 4 months. We were there, and we were traveling, we gave our best, but we did cry, we did had that mourning thing, but that was tough when he was suffering, when he was alive, when he was going through all those treatments. There wasn't a single day that we haven't cried. There was a single day where we didn't had morning. We had a routine, like every morning, every evening we would cry, we would not understand what is happening. There were weird things happening to him. So but I also realized, because I had an India experience when I was 15 or some 15, 14 something. So I realized that that side is not that bad, but I was crying only for what he was going through here. So that was my Yeah. concern. So ek bar, when see, what you asked me earlier is that we can't cope up. That is because obviously we are out of our comfort zone. Suddenly, the person is in a complete comfort zone, because that's the right place for a person to be who's suffering so much, right? But still, in spite of doctors telling me, you stop the treatment, we didn't do it. We was like, no, if it is going to happen, it will happen naturally. We stressed another month of constant treatment, but we didn't stop it, because you don't stop trying. You have hope in spite of knowing it will not happen. You have hope. So that was the period. We cried, we were sad watching the person suffer so much. Every day I have cried myself to sleep for months. But once that happened, once he gave up on his own, he passed away. We decided the next day there's nobody's going to cry. And the moment they were bringing it from the hospital, bringing him to the home, I called everybody, like whoever's going to come to my house, that if at all some of you are emotional, please don't come here. You come here later on, because I don't want anybody else in my family to be more affected. Now we've accepted it. It is done. We don't want to cry about it anymore. So I have not cried about it since then. And of course I feel sad when I think about those situations, what the suffering which happened. But that was here, that was not because we passed away. Everybody has to die. But what happened here, that was more painful, and that keeps still haunts me, and that's a different story. But after that, the very next day we decided that no mourning period. We did all the rituals which you do for 12 days, 13 days. We completed that. But that was
It will sound very weird, but that was kind of a, a get together. Like people were coming, nobody was allowed to cry. Everybody smiling, laughing, talking to each other, greeting each other, supporting each other. So I made a very strict rule that nobody is going to cry here after that. And like the guests come and they sometimes overdo it. Like you have accepted it, but they can't accept it. So I've literally sent one person back home from the funeral because the person couldn't control. I didn't allow the person to attend it. To send her back because we didn't want everybody else to be affected. And I've been talking about these things since I was a kid. So I knew, for me, I knew he was on a better side. Things are good for him. Everything is nice. So I was relieved. There's nothing. But then, there was also this society thing. Like everybody will be shocked that, Hindi, अरे Ritesh. वाह, तो सब बहुत शॉक हो गए थे कि कैसे कोप अप कर रहे हैं ये. वी डिडंट अलाउ my mother to wear white clothes. हमने उनको टेंडर पे डाल दिया आफ्टर 3 months. We want her to date again, which was impossible क्योंकि कोई 30 years के marriage के बाद you can't suddenly think of a person. So that was all being judged. Like people still maybe judge behind, but on face nobody tells it because maybe they are too scared of me. So they all say things. ये गलत बात है, ये ऐसा है, ये वैसा है. But I think the way we coped up, that should have been documented and shown to people because Actually, I think we everybody went should up. do that. Everybody should Yeah, do that. everyone should do that. And so You, you were it talking was. about यू तू 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 ये कह रहा है कि 3 महीने के बाद मॉम को टिंडर पे डाल दिया. मेरी मॉम का डिवोर्स Yeah, हो 3. गया. मेरे डैड को गए हुए 20 साल हो गए. आज भी मैं बोलती हूँ कि स्टार्ट डेटिंग, गेट मैरिड, गेट अ कंपेनियन. मैं तो तब से बोल रही हूँ. तो मुझे गालियां देती है, तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया. अरे डिवोर्स हो गया यार, मर गया बंदा. उसने जिंदगी में कभी रहते हुए तो तुम्हें कोई सुख दिया नहीं. अब तो वो चला गया. प्रॉब्लम क्या है? दुनिया क्या बोलेगी? अरे भाड़ में गई दुनिया. जब तुम रोते हो तो दुनिया आती है आंसू पोंछने. भले किसी भी हाँ, वजह से so रोते हो. जब तुम दुखी होते हो, आई वो मीन व्हाट दुनिया but एंड वो व्हाट सोसाइटी मैन. but that's the understanding we had in last 4 months when he was suffering. जब वो हो रहा था, so that is the understanding we got that nobody will go out of the way and come to support you. In that time, nobody came. People come and go, it's a formality, but nobody went out of their way to support you. So I did not really give anybody a right to go out of way and disturbed us because they were not able to support us. All of people come, they meet you for formality, but then Okay, at the end, one second. First of all, you keep going back to English, so people have because an can have suppose an issue. And, you huh? would have told me, I would have prepared. You didn't tell me that Hindi mein karna hai, I would have prepared it. It didn't strike me, and I didn't know it was such big an issue for you. Okay, and another thing, Suresh, this session is not about whether hell or heaven exists. This session is not about karma. This session is, we have had other sessions. You can go back and see our, videos. इस बारे में हम लोग कर चुके हैं सेशंस. तो ये सेशन उस बारे में नहीं है. सेकेंडली, हेल और हेवन, स्वर्ग और नर्क है या नहीं है और कहाँ है, ये हर एक की अपनी अपनी सोच है. अगर आप वैसा सोचना चाहते हो, यू आर मोर देन वेलकम टू थिंक इट. इट इज योर बिलीफ सिस्टम. एक बात याद रखना कि हमारे शास्त्र या जो भी रिलीजन्स हैं, उनके जो शास्त्र बने हैं, दे आर ऑल सिंबॉलिक. वो सारी कहानियां जो हैं वो इंसान को समझाने के लिए बनाई गई हैं. सच में वहां आसमान में कोई तेल में पकोड़े की तरह इंसान को तल नहीं रहा है. तो ये सब जो कहानियां हैं, ये इंसान को डराने के लिए बनाई गई कि डरो, बुरे कर्म मत करो, नहीं तो ये होगा. लेकिन अगर आप बिलीव करना चाहते हो, आप शौक से करो. हम नहीं करते. और इस बारे में ये सेशन है नहीं. हम सेशंस पहले कर चुके हैं. जरूरत पड़ी तो हम एक और सेशन फिर कभी कर लेंगे जिसमें अलग अलग लोगों को बुला के उनसे इस बारे में डिस्कस करेंगे. यहां इस वक्त हम लोग मौत के बारे में बोल रहे हैं. सो इफ एनीबडी ट्राइज टू हाईजैक दिस सेशन with any kind of comments that are not welcome, I will simply block them.
or put them on timeout. Okay, thank you. Yes, continue Ritesh. प्रॉब्लम Okay. क्या है कि बहुत सारे लोग ना, स्पेशली डॉक्टर विलास जगदाले का वीडियो करने के बाद उनके भी काफी सारे व्यूअर्स वगैरह, तो वो लोग सब दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ इंग्लिश. सेकेंडली आई टोटली अग्री, हाँ बाहर की कंट्रीज से पहले बहुत सारे लोग देखा करते थे, शायद अब भी देखते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादातर वो सब इंडियंस ही हैं और लोग हाँ, हिंदी के साथ कंफर्टेबल हैं, तो उन्हें, मुझे खुद कई बार मैं भूल जाती हूँ और दिक्कत होती है क्योंकि हम लोगों को इतनी आदत पड़ चुकी है इंग्लिश में बात करने की. बात से ज्यादा लेकिन आई थिंक इट इज हाई टाइम दैट वी गो बैक टू हिंदी बिकॉज good. English is a language of the spells. So after knowing that, and which is absolutely true, I decided also to try and do most sessions in as much as Hindi as possible. You said And I that line. completely forgot to tell you that. Said that line in English yourself. Yeah, What? so I don't know all these, words. Of course, we speak Hindi, but I don't know how to say collective consciousness is Hindi. I don't know how That's to. okay. Once in, see, a few words in I between, would have I'm sure prepared. everybody understands. Few words in between is fine. हम पूरा बिग बॉस करते हैं अभी सिर्फ हिंदी में नो इंग्लिश. ओके, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे वैभवी? हम बात कर रहे थे कि लोग जो उभर नहीं पाते अपने लव्ड हाँ, वंस के, एंड यू तो वर स्पीकिंग एक अबाउट एक योर एक्सपीरियंस. बोलता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, तो ये बीमारी हमको नहीं है. सो हमने नहीं सोचा वो सब. एंड जब सैड सिचुएशंस होती थी, तो अब उस टाइम आपको पता चल जाता है लाइक कितना लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और कितना डिस्टेंस से हो सकते हैं, कितना बोलते हैं और कितना एक्चुअली में कर सकते हैं. तो वंस वो सब होता है एक्सपीरियंसेस, तो एवरीबडी इज देयर, बट इट्स नॉट रियली देयर एट द एंड. इट्स जस्ट योर फैमिली. सो फिर वाई शुड, मतलब उनकी वजह से मैं अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ इफेक्ट होने क्यों दूं? पीपल माइट टॉक, बहुत बात करते होंगे बिहाइंड द बैक, स्पेशली दिस टेंडर थिंग. Now I'm saying it on camera because not, it's not that she's dating somebody, but हम try कर रहे हैं that she should do it and she should लेकिन move to. ठीक But है. we'll talk about it अभी भी कि ये क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, ऐसी कैसी बात, she is 54 something, ऐसी कैसे बातें कर रहा है, you should. But they ask me why. Okay, everybody asks me why on why you do this, why you do that, and I have one common answer to everyone is like, because why not? Do you have a reason not to do it? No. Yeah. To not to do it. So it's like why? Because why not? So कल कोई आपसे पूछता है आप क्यों कर रहे हो ऐसा, कि क्यों दूसरी शादी करनी क्यों है? नहीं करूं? Because क्यों नहीं कर रहे हो? Give me a valid reason. They will not have a valid, but they will tell you it's society. No, no, no. Give me a valid reason. लोग क्या बोलेंगे? No, give me a valid reason. Is it a valid reason? No. Somebody is going to die. किसी का बुरा हो जाएगा, किसी को कोई नुकसान पहुंचेगा. Valid reason? No. नहीं, सी आई अंडरस्टैंड वन थिंग, इन दिस केस जाने वाला तो चला गया, हाँ. लेकिन जो जी रहे हैं वो अपनी जिंदगी को खराब क्यों कर रहे हैं? आपने तो जीना है, जब तक आपकी नहीं लिखी तब तक आपको जीना पड़ेगा. जब आपकी मौत लिखी होगी 10 साल, 20 साल, 50 साल, ओके, आपको जीना तो पड़ेगा. तो हंस के जियो ना, रो के क्यों जीना है? जो Because मर गया, लेकिन उसके पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो दैट डजंट मैटर कि कोई मर गया या कोई नहीं भी मरा, तो लोगों को हमने बात किया था कि एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट आर इमोशनल messages. They all want emotional pain. They all crave for it. Like you saw what Talk about that. yeah, what happened in Sushank's death. The whole world had that inside, and a celebrity died and it came out. The release, वो release बाहर आ गया कि सबके अंदर वो, but you will not accept it. Even if I tell you that you love pain, you will like, what nonsense, I'm a modern person, I go out, मैं ये करती हूँ, मैं करती हूँ. But you have, sometimes you realize that you have created problems जो exist नहीं करते थे, drama. And we all do that. Sometimes it happens for real, like somebody passes away, कोई चला जाता है, तब that emotion, we love that emotion of pain and guilt, and we always want to experience it again and again and again. तो person तो चला गया, अब इनको तो पता है, उसको नहीं पता चल रहा है whatever we are feeling, वो हम अपने comfort zone के लिए कर रहे हैं to satisfy that
इमोशन, बिकॉज वो इमोशन इतना स्टफ्ड होता है, नॉर्मली हम उसको बाहर नहीं निकालते, Why? because we are you programmed, to be strong, not to be sensitive. If, earlier it was with men, now it's with women. Don't cry, you are equal, you do that, you be strong, strong, strong. People don't cry on silly things, like, people don't cry on small things. People have become very strong. They're trying to be not too sensitive, but uski jagah they become hard, and that emotion is suppressed. That mourning emotion which we all have, it is suppressed. You rather use it on something. Will you ever cry if you see a tree cutting down? No. Maybe Or not. the animal being slaughtered, you won't cry. So I will. when something happens in nature, something that you don't cry, you do I do. what? Can you do? I mean, if I see So a dog hurt or a cat if you hurt or somebody being, you know, I start crying. मैं तो पिक्चर देख के रोने लग जाती yeah, हूँ. तू so क्या that's बात how कर it's रहा है? supposed to be. You release your emotion immediately. So you don't have a build up for it. इतना सारा build-up हो जाता है, इतना सारा, because sometimes you think this is right. You can even cry when you're watching a TV show, and if it is sad, you go ahead and cry. You know, पर लोगों so को all दर्द these इतना things, पसंद where क्यों है? real situation happens in life, पसंद क्यों है इतना? दर्द इतना क्यों पसंद है? because सारे souls का, because सारे जो souls होते हैं, जो good souls, they have a concept. हमने last time discuss किया था, like God is a ball of light. This is what we see a creator as, ball of light, a ball of light, sorry. So what this spirits and entities think कि जितना आप suffering करोगे, उस ball में आप उतने ही higher stage पे पहुंचोगे when you merge back. Okay, हाँ, so because this is it's the programming apparently that everybody has. It's seven not seven hierarchies होती है, heavens is होते higher, हैं या is at the higher. highest, yes. So the more See, pain I'll tell you, for example, this see this thing, okay, this square or whatever this is a god. This is a ball of light. Okay, suppose this is a creator. Okay, all of us die back, merge here, merge here, merge here. uh, People with higher consciousness go a bit above, there. People who suffer the most, they feel that they're going to cross here and they're going to reach here. It's the same thing, it's one light, it's just that different vibrations. So everybody feels that, the more we suffer, the higher we reach. But वो क्या होता है, वो suffering में they forget कि the suffering is just here. They keep coming back, keep coming back, keep coming back, and वो होता रहता है. That's why you see, हमेशा लोग बोलते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है. ऐसा क्यों होता है? Everybody says that. क्यों? So because all these good souls, they have this concept in their brains that more we suffer, closer to God. That's exactly what he said. दर्द की So आग that आत्मा that को शुद्ध that is. करती है. That's what he's saying. But But ये I don't concept think that's true. क्या? मुझे नहीं लगता ये सच है. No, but people, मुझे नहीं लग... if, if you take people, take 100 people in trance, if take 100 people in past life, out of 75, 80 will tell you that I have chose my suffering, and the more I suffer, I will go closer to God. Or if you take them in a hypnotherapy, the core will reach to that उन्होंने decide किया है उनको suffer. I'll tell So you. core में अगर उनके अंदर लोग से ये at the समझते हैं, सबकॉन्शियसली उनके सोल ने ये डिसाइड किया है कि मैं ज्यादा सफर करूंगा तो मैं भगवान के नजदीक पहुंचूंगा. हो सकता है. ओके, पॉसिबल. मुझे एक बात बताओ, जितने टिबेटन मॉन्क्स हैं, जितने साधु या जो लोग हैं जो भगवान को अपेरेंटली जिनको मोक्ष मिला है, तो हैव यू सीन द टिबेटन मॉन्क्स इन द मॉनेस्ट्रीज? दे एंजॉय. वो करते हैं जो उनको करना है. उनको डांस करना है, डांस करते हैं. सिंग करना है, सिंग करते हैं. कोई क्राफ्ट सीखना है तो क्राफ्ट सीखते हैं. एम्ब्रॉयडरी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कारपेंटरी, जो भी उनका मन करता है वो करते हैं. मेडिटेशन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हंसते रहते हैं. वो पेन नहीं झेलते हैं.
कोई भी पेन, इनफैक्ट छोटे से बच्चे को मॉनेस्ट्री में डालते हैं, वो बच्चा वहां पे बड़ा ही होता है खुश रहना सीख के, और वो लोग भगवान को जल्दी पाते हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक। अगर दर्द से भगवान को पाते हैं तो फिर वो बचपन से जो मॉनेस्ट्रीज में लोग बड़े हुए हैं और उनको मोक्ष मिलता है, खुशहाल जीते हैं जिंदगी। हैव यू सीन दैट फिल्म 7 years to Tibet और समथिंग लाइक दैट? एक टॉम क्रूज की फिल्म आई थी जहां वो अमेरिका से आता है जानबूझ के, उसे लेह लद्दाख जाना है, उसको मॉनेस्ट्रीज के बारे में पता करना है और मोक्ष पाना है वगैरह, और यहाँ पे आके वो देखता है कि ये लोग तो बड़ी खुशहाल जिंदगी जीते हैं, उनके पास पैसा नहीं होगा, बड़ी गाड़ियां नहीं होंगी, लेकिन वो इतना पेन उठा के वहां पहुंचता है और वो देखता है बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, खुश हैं। आप भगवान को तब पाते हो जब आप खुश रहते हो, जब उसका शुक्र अदा करते हो, जो भी है उसमें खुश रहना सीखते हो, तो भगवान को पाते हो। अगर आप रोते रहोगे, हर वक्त दुखी होते रहोगे, भगवान को नहीं पाने वाले। भगवान बोलेगा कितना भी दो, तेरे को रोता ही रहता तू, तो तेरे को देके फायदा क्या है? See, that is my thinking. This is my, what I have learned in my experience. This is what I've learned. मैंने ये सीखा है आखिरकार इतने सालों बाद, मैंने ये सीखा है आज की डेट में। पहले मुझे कोई कुछ बोलता था, मैं ऐसे रिएक्ट करती थी, ऐसे। अब दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग रह गए हैं जिनको मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ, एक मेरा पति और एक मेरी माँ, बस। बाकी दुनिया के साथ नहीं करती, लेकिन रिएक्ट करती थी। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं चुप हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ इसमें मैंने क्या सीखना है, मेरा ईगो कहाँ मुझे दबाना है, मैं को मुझे कहाँ दबाना है। अगर मुझे कॉन्शियसनेस में जाना है, अगर मुझे असेंड करना है, आई हैव टू किल माई ईगो। दैट इज व्हाट आई थिंक टुडे। तो उसमें क्या है, उसमें पेन नहीं है। पहले मुझे तकलीफ होती थी, रोती थी, इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा, वो झगड़ा करती थी। अब मैं सोचती हूँ मैंने ऐसा क्या किया और मुझे क्या सीखना है। दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, झेल लो, ठंडे हो जाओ, उसके बाद शुक्र करो भगवान का कि जो है जैसा है, इसमें थैंक यू। तब पाओगे आप भगवान को, रो के नहीं पाने वाले। तो अगर लोग कहते हैं कि दर्द से, वो कहते हैं ना सोने में तप के सोना, आग में तप के सोना बनता है, सॉरी, बुलशिट, क्रैप। आप लोगों को ना एक वो बंबू दे दिया है एंसेस्टर्स ने और लोगों ने, ताकि आप झेलो, ताकि आप रो। क्यों रो भाई, खुश रहना सीखो यार। कल, आज में जीना सीखो। अब कल की सोचोगे, पास्ट की, फ्यूचर की सोचोगे, कभी सुखी नहीं हो पाओगे। लिव इन द नाउ, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी हैप्पी। ओनली देन यू विल गेट गॉड। दिस इज व्हाट आई थिंक बॉस, ऑनेस्टली। स्पेशली लास्ट 2 years में मैंने ये सीखा है। आज में जियो, मुझे तकलीफ नहीं होती। को मेरे को कल मेरी फ्रेंड के बारे में पता चला तो मैं तो मतलब मेरा रो रो के हाल बुरा हो गया कि कल को मम्मी ने भी वैक्सीन ले लिया, मेरी सिस्टर ने भी ले लिया, मेरे नेव्यू ने भी ले लिया, मेरे इसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, मेरी फ्रेंड्स ने भी ले लिया। हाय हाय, उनको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, सब मर जाएंगे तो मैं जी के क्या करूंगी। मैं ये सोच सोच के मैं रो रही थी कल। डर था, तो वो डर था ना, जरूरी तो नहीं है कि उनको होगा। तो मैं फ्यूचर में जी रही थी ना, आज मैं जीऊं तो शायद खुश रहूं। दिस इज व्हाट आई थिंक। what does meditation tell you? मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है, आज में जीना, अभी में जीना। तब आप ईश्वर को पाते हो ना, जब आप अभी में जीना सीखते हो, माइंड को ब्लैंक करना सीखते हो। तो वैसे ही जीना सीख लो, अभी में पालोगे ईश्वर को। दिस इज व्हाट आई थिंक। ओके, कैरी ऑन। So you started with this monk thing, okay? तो ये जो monk thing है, वो हंसते रहते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, what you narrated, exactly this is very similar to afterlife. This is what happens. You're free to do what you want. पेंटिंग सीखना है, डांसिंग सीखना है, कुछ नहीं करना है, you know, it's your choice. Before you come back, exactly this is the scenario which I have experienced and have got validation from a lot of big people that this is what happens. Exactly like this. You meditate, you do paintings, you learn dancing, you learn singing, जो भी चाहिए वहाँ पे वो सीख सकते हो, और you decide to come back and do it again.
Now what these people do, monk people, like you said, वो हमेशा खुश रहते हैं, suffering नहीं करते हैं, because they actually awaken people. बट वो कॉन्सेप्ट उतना पॉपुलर नहीं है जितना बाकी के रिलीजन्स हैं. व्हाई? बिकॉज फिर उसमें वो हायरार्की चली जाएगी, फियर चला जाएगा. सो वो कॉन्सेप्ट तो कभी पॉपुलर नहीं होने वाला है. बट अभी भी इट नीड्स अ मॉडिफिकेशन. आई फील लाइक वो करने के लिए आपको सब कुछ छोड़ के वहां पर जाने की जरूरत नहीं है. लाइक यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट बिकॉज यू लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड. You don't need Yeah. to do that. Last 3 years, 4 years, my life has completely changed because I've surrounded with very less privileged people. They were not necessarily that good in their lives. They were not doing well. They were not having anything. Maybe you can call it like, they don't know how is the next day going to, they survive. They're going to survive the next day. कैसे होगा वो भी नहीं पता होता था. But a lot of people I met, they just create their reality every day. They create what they want every day, and they're so happy. People, when you see some people, like I have a friend, I told you Shubham. about Shubham. Okay. uh, Shubham, yeah. So when I lost everything, I felt I lost, something out of the world. But when I met him, I felt like, my suffering was like nothing. Okay. And I see this person always happy, always smiling, jumping. The whole family is like that. They've lost their father, they lost their brother, they lost their work, their jobs, everything they lost their house. you know and then this person is coming and making me, uh, learn certain lessons which I never expected to learn from a 21-year-old. हिंदी. Okay, हिंदी. Hindi. तो ये शुभम की बात कर रहा है, जो इसका दोस्त है. मैं उससे कई बार मिल चुकी हूँ और बहुत ही सिंपल सादा इंसान है. लड़का इसी की उम्र का है, शायद शायद इससे 2 साल छोटा ही होगा. दो छोटा है तुझसे? 10 years younger than me. He's हाँ? 10 years younger than me. He's 10 10 years younger years than younger. me. 10 साल. Yes. 10 साल. अच्छा, ओके. एंड मतलब उसकी जिंदगी की कहानी सुनोगे तो रोंगटे खड़े, एक्चुअली रोंगटे खड़े हो जाएंगे. उसकी जगह पे मैं होती तो पता नहीं But मेरा हमको क्या होता. मतलब but हम वो कहानी कैमरा पे नहीं बताएंगे. But it was very sad. नहीं It नहीं was very बताएंगे नहीं, लेकिन sad. जैसे But तुम कह रहे थे कि वो हर वक्त खुश रहता है, बहुत. इसलिए उसकी हर इच्छा पूरी भी होती है. राइट? समथिंग हाँ लाइक दैट. हाँ, because I see कि वो सोचता है और वो चीज हो जाती है. Like no matter what, like he has to buy a PS of 50,000, next day it will appear. He doesn't cares about money. He just cares about this is what I want. Why is that? एक तो he's not a overthinker. Second thing, they are हिंदी. all, वो हिंदी. हमेशा हिंदी. हमेशा खुश रहते हैं. नो मैटर व्हाट, आप उसके घर जाओ या यहाँ बुलाओ, कहीं पर भी करो. द स्मॉल लिटिल सीक्रेट विच यू लर्न फ्रॉम अ 21-year-old, it you don't have to be a monk to achieve that awakening or nirvana. Okay, he parties crazy, he's a like funny brat, all of that. You can be all of that. इतना रिलीजियस भी नहीं है, स्पिरिचुअल भी नहीं है. बट हिम एंड फ्यू अदर पीपल आई नो इन माई लाइफ जो एकदम राइट प्रैक्टिस में लाइफ रह रहे हैं. दे नॉट स्केर्ड ऑफ डेथ, दे नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग. उनको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे नो हाउ टू बैलेंस. एंड द कोर टू देयर क्वालिटीज आई फील इज दे डोंट हैव फियर एनर्जी. किसी भी चीज का डर ही नहीं है, बिकॉज सब कुछ हो गया. इससे ज्यादा भी होगा तो इससे कम ही होगा. हो जाएगा तो ना. वो बैंक होता है ना, जब जो वो बिग बैंग होता है लोगों की लाइफ में, तो ऑफ कोर्स बिग बैंग हुआ उसकी लाइफ में, मेरे लाइफ में, हम सबके लाइफ में, तो तब हमको कोई ना कोई अवेकनिंग मिली. बट स्टिल मेरे को लगता है हम लोग अभी बहुत दूर हैं टू गेट कंप्लीटली where we can call ourselves awakened. And I see these people जो ना spirituality practice करते हैं ना religions practice करते हैं, they just living. And वो मेरे को लगता है they are actually awakened because they're not bound to do certain mantras, they're not bound to do meditations. They just live with gratitude, live with smile, they live with uh, nothingness. They don't care about anything, which is a wrong thing to शुक्र do. अदा करता है हर वक्त. हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है, मैंने कभी ऐसे ग्रेटिट्यूड भी सुना है उसके मुंह से या इन सब लोगों के मुंह से, बट दे आर हैप्पी, always happy. So that repeats your cycle. And then I have never seen these people in problem. And तो in
He's been in front of me. He came to me with like 10,000 rupees. He wants to open a small setup, and now he owns a 2.5 crores investment of company, and that happened Wow. in front. And we made it happen together. Like, I wasn't wanting to do it, but he was so confident because you don't have that fear energy. So So from basically, when you say he doesn't have fear energy, he yeah, has faith energy in himself and in the universe. more has nothingness. The faith is like ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा. He has nothingness, like My जो battery, होगा acceptable. Where are carry you? on. लैपटॉप की बैटरी गई. I forgot to Okay. charge it. Okay. हाँ. So nothingness, and like you said थोड़ी देर पहले कि मैं कल बहुत रोई, and डर. मैं बहुत रोई, in spite of not being affected by people, but still this affected you. So also a big concept of preparing for yourself to life after death ये है कि you have to be unaffected, completely unaffected, as in like, and I've seen that in millionaires. I've studied 200 geniuses, and that includes a lot of billionaires. This is a common link which they all share. उनके सामने अगर बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाएगा तो वो इमिडिएटली रिएक्ट नहीं करेगा पर्सन. ही विल बी लाइक सिटिंग, ऑब्जर्विंग, टेक अ माइक्रो पॉज, देन वॉट एवर डू. अंदर इफेक्ट नहीं होता है. वी आर ऑल सो सेंसिटिव that you cried because somebody had COVID. Now you had involved crying in your cycle, in your aura. That might repeat again and again. But if you would have taken 2 minutes, we all should have this 5 minute rule. Ki whenever we hear a news, you see the time immediately, and 5 minutes you don't react. Okay, zero. That is the most difficult thing to do. But if you master it, Very then you difficult. then you awakened. You don't need any spiritual guru, you don't need anything, you don't need nothing. You drink, you party, you do what the fuck you want. You are awakened if you stop being affected by your surroundings. हिंदी में बोल ले भाई. इसको हिंदी में explain करो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करो. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कह रहा था कि कोई भी चीज होती है जिंदगी में तो हम लोग तुरंत उसको उसकी उसका उसकी तरफ रिएक्ट करने की कोशिश मतलब करते हैं. आदत है कि अगर किसी ने कुछ गुस्से में कह दिया और तुम सही हो लेकिन तुम्हें डांट दिया तो तुम इमीडिएटली बोलोगे कि नहीं मैंने ये नहीं किया, रिएक्ट करोगे. और चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो इंसान सम में रहना सीख ले, बैलेंस करना सीख ले कि अच्छा हो या बुरा हो, ना ज्यादा खुश होना है ना ज्यादा रोना है, बैलेंस्ड रहना है और हमेशा एक सुकून की खुशी उसमें जीना है. जो मन को अच्छा लगता है करो, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आती है. जो मन को अच्छा लगता है करो मतलब जाके ये नहीं कि किसी का रेप कर लो, किसी का खून कर लो, किसी की चोरी कर लो. इसका मतलब ये है कि क्रिएटिव बनो. आपको जो करना पसंद है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये वो करना आपका धर्म है. अगर आपके पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ रहते हो तो उनको बुढ़ापे में उनका सहारा बनना आपका धर्म है. धर्म क्यों है? क्योंकि उन्होंने तुम्हें संभाला है, तुम्हें पैदा किया है. और फिर भी अगर तुम कहते हो कि मुझे नहीं करना है तो उनके लिए कुछ इंतजाम करके जाओ. और अगर आप शादी करते हो तो जो मन में आता है करो मतलब जाके अफेयर कर लो, नहीं, सॉरी. बीवी बच्चे हैं, उनकी तरफ आपकी जिम्मेदारी है. आपने जो भी शादी किया आपने कुछ प्रोमिसेस किए. अभी किसी ने, आई थिंक मधु बोल रही थी कि मुझे तो दोबारा जन्म लेना है क्योंकि मैंने किसी को बोल दिया है कि हम अगले जन्म में ऐसा करेंगे या अगले जन्म में मिलेंगे. एक बात याद रखना, किसी को किया हुआ वादा, किसी को दी हुई दुआ या बद्दुआ, कोई खाई हुई कसम, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं. कभी ना कभी इंसान को चुकानी पड़ती हैं. तो इसलिए पहली बात तो ये, मैंने भी बहुत लोगों को किया है या बहुत लोगों ने मुझे किया है, लेकिन आई कीप कटिंग ऑल माई वाउज, ओथ्स, प्रोमिसेस के नहीं, मैं खुद को उस सब से आजाद करती हूं.
ये मैं यूनिवर्स को 50 बार बोल चुकी हूँ, कई बार तो मैं रिकॉर्ड करके उसको लूप में चलाती हूँ। तो अगर आप ऐसा कर चुके, अगर आप दोबारा जन्म लेना चाहते हैं, शौक से लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 50 जन्म लो, 100 लो, 5,000 लो, लेकिन ये नर्क जो योनि होती है, उसको सेक्स करने के लिए तो लड़कों को बड़ा मजा आता है कि ये हमारे लिए स्वर्ग है। हकीकत में हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है ये नर्क का द्वार है, क्योंकि वहां जब बच्चा पैदा होगा और बच्चा बाहर आएगा, तब वहां से इस नर्क में आएगा। ये जो धरती है ये बहुत सुंदर है, मोगली की तरह आप जियो, फिर तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। वो भी तो बच्चा ही था जो जंगल में जानवरों के साथ पल बढ़ के बड़ा हुआ। वो जिंदगी जियो, स्वर्ग ही स्वर्ग है। लेकिन अगर इस तरह की जिंदगी जीनी है तो फिर तो ये नर्क है। इस नर्क में खुद को स्वर्ग, अपनी जिंदगी को बनाना, ये आपके हाथ में है। इट्स टोटली इन योर हैंड्स, दिस इज व्हाट आई फील, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब आप कितना भी स्वर्ग बनाने की कोशिश करो, Okay, कोई but आएगा और I गुड़ don't गोबर agree. करके चला जाएगा। क्या? Okay, I don't agree to your Narg ka Dwar quote. This is completely I religious thing said, to say. I Okay, said that it's written in the but Vedas. it is written because all those Vedas and spiritual books have been edited so many times to serve the hierarchy. Okay, so the No, but person in I power believe that has taking birth as a human, see, understand one you thing. take if you're taken a एक birth minute. from a place which is okay, which is See, letting you in the understand world one thing. that can't be Understand one thing. hell. रितेश, बच्चा क्यों पैदा होता है? शादी करते हो, सुहागरात मनाते हो, बीवी के साथ, बीवी है क्यों? तुमने शादी क्यों की? तुमको रेगुलर सेक्स के लिए कोई चाहिए इसलिए शादी की? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। और इसके अलावा और कोई वजह नहीं होती किसी की शादी करने की। यू वांट समबडी फॉर रेगुलर सेक्स, तुम्हारे बर्तन धोए, तुम्हारे कपड़े धोए और तुम्हारी माँ बाप की सेवा करे। General, इसके अलावा कोई शादी किसी और चीज के लिए नहीं करता। वो लव मैरिज होगी ना, that is तब भी यही होगा। you are Let's generalizing be your personal practical experience. in life. Putting it This out is this is I no, can't hear you. that's Your not voice true. keeps disappearing. Can you hear I me? couldn't hear you. Now I can, but तू पीछे जाता है ना, तो आवाज तेरी बंद हो जाती है। Okay. तो हाँ, Abhi, am I audible? Okay. First of all, not fair. Okay, what you're saying because you're putting. There's so many people waiting to get married and they're excited. And what you're saying is maybe your personal experience, but वो generalize थोड़ी हो सकता है सबके साथ. बाप रे, you have summarized such a negative way कि कोई अच्छा शादी नहीं करे. ठीक है। ठीक है? That's not बहुत true. लोगों को शादी Okay, करनी that, है, लव मैरिज करनी है। शादी के बाद क्या होता है? शादी के बाद तो, अरे तूने मेरी माँ को ऐसे कैसे बोला? अरे तूने आज खाना नहीं बनाया? नो, आई तो वांट टू हैव सेक्स। वाइफ सेज नो, आई हैव अ हेडेक। आई मीन, but कम as a ऑन, लेट्स subject बी नहीं होता. प्रैक्टिकल। I've seen that. No, that's being a little negative, not practical, because if something might happen to you, is not necessary you हर एक के साथ same experience. So people have different experiences. I've seen people going crazy married, happy married life until 30 and Okay. 40, 50 years. So that No, exists. I've not seen I that. have I've not experience. seen that. I have not experienced, do not experience Okay. it, So but that basically, out मैं क्या कहने की कोशिश there. कर रही थी कि बच्चा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें सेक्स करना है, इसलिए बच्चा उसका आउटकम है। बहुत कम लोग और बच्चे को पैदा क्यों करना चाहते हैं? अरे मम्मी पीछे पड़ी है 4 साल से कि 4 साल हो गए शादी को, बच्चा पैदा करो। मतलब इसलिए बच्चा पैदा कर रहे हो? बच्चा पैदा करने से पहले कोई सोचता है कि ये जिंदगी भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बच्चा पैदा करके खत्म नहीं हो गया। पैदा करके उसे कम से कम उसकी शादी जब तक नहीं हो जाती, तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर वो जिंदगी भर शादी नहीं करता तो जिंदगी भर तुम्हें उसका ख्याल रखना है। Are you working for It's population control people? ये शादी के बच्चे, what is wrong? Death. Let's talk about yeah, death. Yeah, वो भी. So, शादी करो, बच्चे करो. We will fight on this in some video, okay? But okay. because I'm trying, trying to get people
people married and they're watching in the other room and you're saying things here. So Okay. we, Okay. we'll अच्छा now okay. need a बहुत हो special video गया. for. Let's not talk about अब this. हम topic. नहीं, this So was you part didn't of it. explain See, which everything is I told linked. you हर before. चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है. मुझे एक बात बताओ. एक सवाल पिछली बार जब मैं भैरवी से बात कर रही थी, किसी ने पूछा था कि एक इंसान इस धरती पे मर गया या हम मर गए, क्या are there parallel universe जहां पे वो इंसान शायद जिंदा हो या इस धरती पे दुखी है, उस धरती पे सुखी हो? What is this whole concept about the parallel universe? We have discussed it, I think, in a 2 hour video where we were talking about 11 different timelines कि एक इंसान के 11 या 11 से ज़्यादा रियलिटीज़ होते हैं. एक टाइमलाइन में मैं गिन्नी को कभी भी नहीं मिला हूँ और इस टाइमलाइन में हम लोग बहुत अच्छी इक्वेशन है और एक टाइमलाइन में भी हम लोग को एक दूसरे की शक्ल भी बेर नहीं होती है. ठीक है. सो देर आर ऐसी कोई डिफरेंट टाइमलाइन शेड्स. भी है? ऐसी टाइमलाइन हो सकती है. Like I've told you once I experienced a different timeline with you where you were with your husband. You called me. You told me he's buying you things on Diwali, and then you said this never happened. So Okay. when we were doing in practice, we were doing a lot of crazy things back then, uh, connecting to different worlds and all that scary things. So I had connected to a timeline where you were very happily married and you called me and then you told me this guy is giving me this on Diwali and I'm going to select the design and all that. And then you said this never happened. I've never called you. And we spoke twice. Okay. So you mean to Now, say वो वाले टाइमलाइन में भी मैं हिंदू थी और यही मेरा हस्बैंड था और मैं वहां पे दिवाली मना रही थी, तो हर it's not टाइमलाइन एकदम ऑपोजिट नहीं होते. थोड़े से शेड्स डिफरेंट होते हैं. ओ थोड़ा सा पर होते हैं. कॉन्ट्रास्ट अलग होते हैं. दिस इज व्हाट एवरीबडी हैज एक्सपीरियंस वंस यू हैव टेकन देम इनटू ट्रांस. कभी कभी ऐसा हो जाता है यू सीन कि ये अचानक इतना कैसे बदल गया, ये अचानक इतना पतला कैसे हो गया, अचानक इतना मोटा कैसे हो गया, या अचानक इतना रिच कैसे हो गया, इसके लुक्स पूरे चेंज हो गए. मतलब नॉट एक्सपेक्टेड दिस पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है. अचानक इतना उसका लॉसेस कैसे हो गए. सो समटाइम्स जो इतनी बिग बैंग की चीजें होती है ना, जो सडनली यू कांट डाइजेस्ट कि ये ऐसे कैसे हो गया. So that is a shifting of timeline. The person is dead in some timeline and coming here with this vibration. So things change. So that's what we also have spoken कि आप दूसरे timeline से चीजें खींच भी सकते हो. Something you टाइमलाइन don't का have. मतलब समझा? Timeline is, in my words, is a different reality which you are already living. Like past, present, future exist at the same time. So whatever you want, you already have it because it is already existing in past. Now you don't know कि वो किस timeline में you have it. Have you created it? You can't directly create it because we have fucked up our aura. By all these affected things and sadness and all this. तो हम directly manifest नहीं कर पाते. वी मैनिफेस्ट, लेकिन समटाइम्स वो मैनिफेस्टेशन उस टाइमलाइन में जाता है जिसका ऑरा सबसे स्ट्रांग है. तो जैसे हम भेज देते हैं वहां पर, यू फील लाइक समटाइम्स विदाउट इवन गेटिंग, यू फील अ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ थिंग. और समटाइम्स लेने के बाद भी यू फॉरगेट मटेरियलिस्टिक थिंग्स. जैसे लेते हैं 2 दिन या 2 घंटे के बाद यू नॉट इवन एक्साइटेड कि उसको लेने के लिए जितना एक्साइटमेंट होता है. ओके. सो sometimes for example there's a big thing, you might not expect to buy this brand of a car and suddenly you get it. Okay. And you'll be shocked, you'll enjoy it for a day or two, but वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा खाली रहेगा कि you don't really attach to that material. You feel that okay, you're done enjoying within 2 hours because that is pulled up from a different timeline. You're not done the whole process. So that's a very elaborated subject and very debatable because everybody will have a different तो version on it. एक बात बताती हूँ. एक बार डॉक्टर योगेश वसंती के वर्कशॉप में उन्होंने बताया था, मुझे टाइमलाइंस के बारे में, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कुछ नहीं पता. ओके, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. We've मुझे done नहीं two पता. line and आई parallel नो. universe. लोगों ने बोला, मैंने सुना, तूने बोला, मैंने सुना. Hmm. मैंने हिप्नोथेरेपी की, उसके अंदर मेरे 11 टाइमलाइंस, वो सब हुआ, वो सब ठीक है, लेकिन मेरे पास उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है. मैंने उसे Right. देखा नहीं है, मैंने उसे महसूस नहीं किया है. ओके. अब
एक बार डॉक्टर योगेश वसंती के, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल पे वीडियोस देखे हैं वो जानते हैं डॉक्टर योगेश वसंती कौन है। जिन जो नए हैं उनको शायद नहीं पता होगा। उन्होंने एक बार अपने टाइम वर्कशॉप में बोला था कि कूली फिल्म में जब अमिताभ का एक्सीडेंट हुआ और वो मरने वाला था, एक्चुअली उसकी कुंडली के, मुझे नहीं पता कितना सच है, उसकी कुंडली के हिसाब से या तो उसे मर जाना चाहिए था या तो वो भिखारी हो जाता, मतलब सड़क पे आ जाता। लेकिन उसने अपने पैरेलल यूनिवर्स के टाइमलाइन से अपनी जिंदगी और अपनी प्रॉस्पेरिटी ड्रॉ की है। तो इज दिस पॉसिबल? That's what I just said. You are pulling out a thing from a different timeline. It's not yours. Okay. Like similarly, when I was 14 or 15, जब मेरा नियर हिंदी डेथ एक्सपीरियंस हुआ, हिंदी है ना, नियर डेथ एक्सपीरियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? जब मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, ओके, सो आई वाज नॉट सपोज टू, मतलब मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि आई विल गो, मैं जाऊंगा, ठीक है। इट वाज इम्पॉसिबल, दे पुल्ड मी from a different timeline, whatever, कुछ भी बोल सकते हो, my family is conscious, prayers or whatever you can call it, or their efforts, but I was supposed to die, and that's what the doctor said, and that's what, you know, I've consulted few people before that, you know, some astrologers and things like that. That's what they said, that, you know, it is hard to say, it's not looking that I'll live. But when I recovered, जब मैंने recover किया, it was impossible. The doctor was shocked कि, you know, I was fully paralyzed, and from that 6 months later I was dancing on a stage. So uh, we definitely pulled it from a different timeline, because I was about to go, I was ready to go, and when I went in the surgery room, it was an 8-hour surgery. I remember I was prepared to go, like this was it, the last time I'm seeing people, and I was so happy. I was happiest that day in my life, because of the pain I was getting, suffering from last 6 months. I was so happy. But, you know, they pulled me out. Now they didn't do a search, puja or whatever, or kundli. ये सब चीज़ों की ज़रूरत necessarily नहीं पड़ती है if we master that technique. You know, we can really pull out things. Sometimes हम लोगों को trance में डाल के दूसरे timeline से चीज़ें pull करवाते हैं. We tried it for you once long back. We did an 8-hour का thing. I think it was 8 hours. Okay, so it is easy, but like you said, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, so nobody can give you a sabut, because it's a supernatural science. It's not something which we have right now on, but you can have a lot of people giving you, you know, voting for it कि ये मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, and it is a very common thing which happened to people. It's just that you need to practice. That's it. And the core is not get affected by anything. That's all. कि किसी भी चीज से इफेक्ट मत हो. 5 सेकेंड का रूल बना लो कि कोई भी चीज को रिएक्ट करने से पहले 5 सेकेंड्स होल्ड करना है, नो मैटर व्हाट. कोई सामने बिल्डिंग से भी गिर गया है तो वेट फॉर 5 सेकेंड्स, देन रिएक्ट, एंड फिर जाके उसको उठाओ. तुम्हारा ब्रेन सही जगह होगा कि उसकी स्पाइन पे हाथ कहाँ रखना है, कैसे उठाना है. इट कैन हेल्प यू इन एवरीथिंग, फ्रॉम एक्सीडेंट्स टू, you know, real situations in your life, or coping up with death, you know. Wait for 5 minutes. टाइमलाइन, एक मिनट, टाइमलाइन और डायमेंशन में डिफरेंस क्या है? uh, जैसे वो बोलता है ना कि same but different, you know, it's almost the same. Okay, timeline is vertical thing where you say that, you know, 1 2 3 11 timelines, that मेरा ये सीधे 11 timelines चल रहे हैं. Dimension is another different thing जो हर एक timeline के ऊपर 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 जा रहे हैं. Like in this timeline you have different dimensions. You know, 10 years back you were a different Guinea. Maybe 5 साल पहले you got some knowledge which was already there, जो पहले से ही था. You might have read it, you might have heard it, but you never register it, because that time your body was not ready to accept that information. Okay, this ego thing which you said that, you know, मैंने अपने लाइफ में ये incorporate किया 2 साल से 3 साल से, ये information तो हमेशा से थी, but your body was not ready to go on that dimension. So you are crossing dimensions. That is dimensions when we are, you know, in a physical body and still reaching higher. In spite of being at one place, we're tied up inside, but still we are moving dimensions. Timelines is totally different thing. You can't be moving timelines, you know, that is. How do you pull something from a dimension, from a, मतलब किसी और टाइमलाइन से अपने लिए जिंदगी
या फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई बीमार है, मर रहा है, उनके लिए जिंदगी उनके दूसरे डायमेंशन से कैसे लाई जाती है, टाइमलाइन से? It has multiple ways, okay, from very properly orchestrated tantric vidhis to being a person who is not affected by anything. There are multiple things which people practice to get there, okay. If you go do it technically, like you said, वो कुंडली वाला चीज जो है, it has to be very accurate. You know, you can't miss one thing here and there. There are rituals in tantrism which can make you do that. There are rituals in a lot of other practices which are not religious practices which can help you, because religion will never allow you to do that, because religion is supposed to create a hierarchy, make you worried, make you fear, make you scared. So these are non-religious things. These are that's why maybe called occult. Okay, Spiritual you can rituals. achieve those. They have labeled it occult and they want to label it black, because so that people don't go near that. Okay, but जरूरी नहीं है वो सब चीजें करनी है, पूजाएं करनी है, tantrism. You don't need that. You be a person like we were discussing, unaffected, fearless, guiltless. If you have these three qualities and you practice it even for 6 months, you can have the miracle manifestation. You think about a thing, it will appear. So, people are going around the world and doing secrets and doing books and doing hours of meditation. You have to practice. वो कार में बैठ के सोचो, ऐसे कार चलाएंगे, ऐसे होगा, तभी होगा, तभी होगा. It's just that you need to have these three qualities. You don't need to do anything. Don't move from a spot. You will achieve it. So there are a lot of ways to get it. Right, my God, this subject is so vast and so deep and so connected to so many other things that you can go on and on and on for hours and it's not going to end. But I don't want to do that because 1.5 घंटे से ज्यादा We hit ना कोई देख really सकता है ना मैं बैठ सकती हूँ. exactly. How much time we done? 1 hour Oh, 21 minutes. 1 minutes. Yeah. Okay, fine. So वो we'll wrap बीच it में up. बहुत सारे और सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो गए ना, बिकॉज वो होते हैं. सो यस, आकाशिक रिकॉर्ड्स डू एग्जिस्ट, और आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारे सारे जन्मों के सारे पल, पास्ट लाइफ के भी, फ्यूचर लाइफ्स के भी, सब कुछ रिकॉर्डेड होते हैं. जब हम मर जाते हैं तो सोल लेवल पे कहते हैं कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो सब रिकॉर्डेड होते हैं. यू कैन मेक चेंजेस, आप उसे बदल सकते हो जब आप ऊपर जाते हो. जीते जी नहीं बदल सकते. कुछ कर्म ऐसे होते, कुछ सो डेस्टिनी जिसको कहते हैं, तो वो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक तरह से है. कुछ चीजें होती हैं जो तय हैं, उसे नहीं बदल सकते आप, लेकिन फिर भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अगर आप डिसीजन कुछ और ले लो या वो कर्म करो या ना करो, तो आप अपनी आने वाली डेस्टिनी के रिजल्ट्स चेंज कर सकते हो. सो होता है ये. Anything else you want to talk about death, preparing for it, heaven, hell? Because people say कि नहीं, कर्मा होता है, कर्मा का रिजल्ट होता है, heaven, hell होता है, वगैरह वगैरह. So otherwise we can wrap up. It's okay, each to his own. Like whatever people believe, they can live that. They're free to live that. Like I am free to not believe in these things, and yeah, just be prepared. Remember these simple 3 steps: not getting affected, fear energy, and guilt energy. So एक बार ये 3 vibrations निकाल दी, and so you can live happily also, because आप miracle manifestation कर सकते हो. आप सोचोगे वो चीज, you will get it. हाँ. And second, death is going to be flawless, and it's going to be even fun. It's going to be a planned pleasure. Like you plan your Valentine's, you book a hotel, you do everything. So this is going to be a planned pleasure that you're ready. I think like everybody also should buy an outfit like, this is going to be my death outfit. To add just a more fun energy to it. Like when I die, put me in this. ठीक है. So I'll buy one and keep and I'll give it to you. So when I die, I'll you give you can. one. I was actually thinking कि आज डेथ के ऊपर सेशन कर रहे हैं तो व्हाइट साड़ी पहन के बाल खुले करके आ जाती हो. That would have been nail. मतलब 5,000 से 5 लाख व्यूज हो जाते थे.
So we'll देन do आई it next. थॉट कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, रहने दो. ठीक है. So We'll wrap. next time if you want to talk about karma, because that seems to be a very debatable subject, that seems to be, people have such strong notions about karma. I think we have spoken about it. हम लोग इस बारे A में lot पहले बात कर चुके हैं. uh, तो came in and joined us and was very opposing to that concept. So people have mixed, reactions to it. But you and I will keep saying things which are weird and which are out of the box, and people are going to enjoy it. people don't So believe it, if but if karma or whatever, maybe you can note down the questions, and if people have very specific questions for me, so next time we'll make a video especially for those questions, and whatever it is, we'll sum it up. Let's today just be death and living. last time when we did a live about karma theory and everything, uh, even Dr. Yogesh, I've done a workshop with him on karma. There is another friend of mine, Kunal, who doesn't at all believe in this karma theory. As long as you don't have guilt and you're honest, no bloody karma can do shit, Yeah, anything about put you into any kind of hell or anything. तो इवन वी तो उस वक्त हम लोग इंस्टाग्राम पे भी लाइव थे, तो कुणाल देख रहा था और उसने भी मुझसे कहा था कि ये कर्मा वर्मा तू क्या बात कर रही है, कर्मा तो होता ही नहीं है. मैंने कहा ये तो लोगों को कैसे समझाएगा, लोगों को तो नहीं समझ में आएगा. वो तो बोलेंगे नहीं नहीं तूने बुराई की, तेरे को सजा मिलेगी, तू जन्म में जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला. ये सब तो नहीं होता है. तो उस वक्त वो सुशांत का जो है वो बहुत ताजा ताजा था, शायद 8-10 महीने ही हुए थे. तो लोगों के दिमाग में ये था कि जिन लोगों ने बुराई की है वो जहन्नुम में जाएंगे, उनको बद्दुआ लगेगी. बद्दुआ इफेक्ट करती है, यस डेफिनेटली, लेकिन जब तक उस इंसान के दिल में कोई गिल्ट ना हो, उसने जो किया, मर्डर भी किया, उसका गिल्ट नहीं है, तो उसको कुछ नहीं होने वाला. पर ये लोगों को कैसे समझाओगे और कौन समझाएगा? पर समझाना भी तो जरूरी है सबको, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ये सब हमेशा से होती है, बट लोग मे बी 1,000 लोग सुनेंगे और मे बी 10,000 लोग सुनेंगे, उसमें से 20% की ही बॉडी इज रेडी टू गो ऑन अ डिफरेंट डायमेंशन. तो वही समझेंगे, वही एक्सेप्ट करेंगे. बाकी 800 अभी आर इन डिनाइल. मे बी 2 साल बाद, 4 साल बाद जब उनके लाइफ में कोई एक्सपीरियंस होगा तो वो भी इनकॉपरेट करेंगे. नहीं, But you पर can't यार, hold at once, maybe one at a time, maybe few at a time. So our job is to give out information, say things. उसमें से जो भी लोग ready हैं, they'll grasp it. Sometimes happen like people go overboard, like one of the videos, somebody, 2 or 3 people have messaged me and called me. They went like on another level. They have, they saw, got some awakening from just watching our videos, and they were like crying. That awakening they've got, maybe their body was ready that time when the information came in. आधे से ज्यादा लोगों को तो बकवास लगेगी कि ये क्या बोल रहे हैं, राइट? But now or later they will realize it and they will accept it, and some people are coming for entertainment, but I think people who come on these channels, जो spiritual channel है, they're all looking for some sort of information. They all know it somewhere, they just need a you know validation. when you say कि आपका belief system preparing for your death, you Hmm. also need to prepare for your next life if you're taking birth. कि ये मेरी आखिरी जिंदगी है, लेकिन अगर मैं अगला जन्म ले रहा हूं तो अगले जन्म में मैं बहुत खुशहाल होने वाला हूं, बहुत प्रॉस्परस होने वाला हूं, ये वो. अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वहां जाके आपको अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट तो आपको खुद ही लिखना है. अगर आप Hmm. गलत बिलीफ सिस्टम के साथ जाओगे तो आप उल्टा सीधा सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे, जैसे हम लोगों ने लिखा है. That when you pass that, तो वो जब आपको बताते हैं, that time you're supposed to say no. Like we say like learn to say no. That's the actual no you say there. That no, I don't want to suffer. I might want to go back to experience things, but I don't want to suffer. I did some things, but I forgive and forget myself. That is okay. Universe works that way. It forgets Very and important. forgets. We don't work that way. We don't forgive and forget, but universe does. So I'll go with the law of universe, not with the law of the planet or the religion, which has concepts like karma and punishments and all that. So I'll go with the law of universe and I'll forgive and forget myself. So मेरे को आना है, but with only good experiences in my life. So that's something which we need to incorporate in that paper
when I'm trying to work on that paper. We'll release it out soon, where we have all these pointers, 10 things you do, like just like your everyday meditation. You do it for 10 minutes, you do it for like 10 seconds, just read out those things, so that आपके दिमाग को validation रोज मिल रहा है. Okay, this is how it is. So yeah, hopefully by the next video we will have that concept ready and we'll put it out. But for now, just have fun. That is the best way to enjoy death. मधु, इफ यू वांट टू गो बैक यू कैन, आप तुम जा सकती हो वापस, कैसे पॉसिबल है? सो तुम्हारे कर्मों पे पॉसिबल है और तुम्हारे बिलीफ सिस्टम पे पॉसिबल है. अगर तुम चाहती हो जाना तो तुम डेफिनेटली जा सकती हो. नो, वी ऑट टू बी इन द साइकिल अगेन एंड अगेन, नहीं. दैट इज Choose to be. आई, हाँ, We that is a choose to be. personal choice. We Yeah, we choose choose to it. be. That's a personal choice. You don't have to be in the cycle again and again. Not necessarily. Okay, chalo. Thank you so much, Ritesh. A lot of people have been wanting to see you, talk to you, hear you for a long, long time. And no, it's acha. No, you don't have to be in the cycle. If it's a question, then you don't have to be in the cycle. You can choose not to be in the cycle. You can तुम ये तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें वापस आना है कि नहीं आना है, और आना है तो कैसे आना है. अंबानी बन के आना है या कोई टॉम क्रूज या कतरीना कैफ या आई डोंट नो हुएवर, आई मीन कोई बड़ा इंसान बन के आना है. This session is not about splitted soul or twin soul, so let's not get into that. But this was basically about death. It was about preparing for your death. It was about how to get over. Now Tuesday को एरन के साथ सेशन जो है वो है कि जब आपकी फैमिली में कोई मर जाता है और या फ्रेंड्स या वो जो भी, तो आप ग्रीविंग पीरियड से निकलते हो, तो वो क्या स्टेप्स हैं जिससे आप खुद को हील कर सकते हो, या होता है या होना चाहिए, और उससे कैसे निकलना चाहिए. सो बहुत सारे लोग हैं जिनके कोई ना कोई फैमिली में या फ्रेंड्स में जिनकी जो गुजर गए होंगे, तो आइए और देखिए. आई होप इट्स हेल्पफुल. Meanwhile, thank you so much, Ritz. And And next time, let's come back soon with something related to, I don't know. Last time also we did something related to relationships, but people just didn't want to. I've noticed one thing: people don't want to come and talk when it is personal. If I do a Zoom session today, everybody will come and talk. Yeah. YouTube live, nobody wants to come and talk, and they don't want to talk about their personal life. Fine, but since tomorrow, I think tomorrow or day after is Valentine's, so I'm thinking of doing just a casual chit chat so that people can open their heart out if they want. So if you want, you're more than welcome to join RITZ. okay, sure. Happy क्वांटम Valentine's. कीज रितेश का चैनल है. नहीं, बार वो बार मेरी पूछ रहे हो उसका चैनल क्या है, तो उसका चैनल है. नहीं, I don't have a channel yet. That's my company name. स्टार्ट करने वाला है ना, किया नहीं है पर करने वाला है अभी. When are you going to start it? We are making it, so I am waiting for 30 videos to complete. So I think it will take another month to go. Okay. So yeah, happy day to all. And agar if we catch up on Valentine's, we'll try to catch up, and or else have fun, be fearless. ठीक है. Okay, All bye. right. See you. Good night. Bye. Good night. All right. Bye. Good night. I hope you enjoyed this session. मैंने कोशिश तो बहुत की हिंदी में बात करने की, लेकिन खास करके जब हम दोनों बात कर रहे हो तो हम लोगों को हिंदी में बात करने की आदत नहीं है. मैं उसे बार बार बोलती रही हिंदी हिंदी हिंदी, बट ठीक है, कोई बात नहीं. अगली बार उसे पहले से बता दूंगी जो इस बार बताना भूल गई थी. हाँ, श्योर. ओके, बाय. यस, श्योर.